नमस्कार बच्चों, आप सब कैसे हो? टुडे वी आर गोइंग टू लर्न लेसन नंबर 24 एडजेक्टिव्स दैट कंपेयर। हमें तो पता है एडजेक्टिव्स किसे कहते हैं। कैन यू टेल मी? एन एडजेक्टिव इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। एडजेक्टिव क्या होता है? वो एक डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है और वो क्या करता है, जो नाउन है उसकी हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है, नाउन और प्रोनाउन। जैसे इधर देखो, द ब्लू बलून इज बिग। बलून इज नाउन। तो नाउन जो है उसके बारे में कौन से वर्ड ने हमें मोर इंफॉर्मेशन दी है? बिग। सो बिग इज द एडजेक्टिव एंड ब्लू इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव। बलून कैसा है? ब्लू है और वो बिग भी है। तो हमें इस लेसन में ये सीखना है, जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनमें कुछ एडजेक्टिव्स कंपेयर करके यूज कर सकते हैं। लुक हियर, द ब्लू बलून इज बिग। ये जो ब्लू बलून है वो कैसा है? बिग है। नाउ लुक, द येलो बलून इज बिगर देन द ब्लू बलून। जो येलो बलून है वो क्या है? ब्लू बलून से बिगर है। तो हमने ये जो एडजेक्टिव क्या यूज किया, कैसे यूज किया? कंपेरेटिव। हमने कैसा यूज किया? कंपेरेटिव। हमने कंपेयर किया ना, पहले बलून से हमने दूसरा बलून कंपेयर किया, तो हम ये एडजेक्टिव एज अ कंपैरिजन यूज कर सकते हैं। अगेन लुक हियर, द रेड बलून इज द बिगेस्ट ऑफ द थ्री। इन तीनों में से रेड बलून सबसे बिग है, बिगेस्ट। तो ये भी एक कंपैरिजन है। नाउ लुक स्टूडेंट्स, बिगर इन दिस वे एंड द बिगेस्ट इन दिस वे, इन बोथ वेज वी कैन कंपेयर। हमें ओनली 2 चीजों में कंपैरिजन करना है, तो हम क्या यूज करेंगे? बिगर, ई आर। वो जो एडजेक्टिव है उसको हम ई आर जोड़ के कंपेयर करेंगे। और हमें वहां पे बहुत सारी चीजें हैं, देर आर सो मेनी थिंग्स, तो उनमें से हमें क्या करना है? एक को ही चुनना है। तो हम क्या यूज करेंगे? बिगेस्ट, ई एस टी, सबसे ज्यादा। द रेड बलून इज द बिगेस्ट ऑफ द थ्री। इन तीनों में से सबसे बड़ा, बिगेस्ट। डू यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट? इन दिस वे वी यूज दिस एडजेक्टिव्स। Now look, small, smaller, smallest. Rabbit is small. Rat, rat is smaller than rabbit. An ant is smallest than rabbit and rat. So in this way we can use these adjectives. Look students, here are some examples are given. Tall, taller, what we have to use? ER. Then tallest. Big, bigger, biggest. Fast, faster, fastest. Clever, cleverer, cleverest. Slow, slower, slowest. Large, larger, largest. Hard, harder, hardest. Hot, hotter, hottest. Kind, kinder, kindest. Thin, thinner, thinnest. Deep, deeper, deepest. Soft, softer, softest. Next, write the correct adjective forms in the blanks. First one, sweet. Then simply we have to use ER to make comparative adjective.
Write down sweeter. Here est, sweetest. Sweeter, sweetest. Old, older. Oldest. Fat, fatter. Here fattest, FATTEEST, fatter, fattest. Light, then lighter, lightest. Wide, wider, widest. New, newer, newest. Do you understand, student? Sweet, sweeter, sweetest. Old, older, oldest. Fat, fatter, fattest. Light, lighter, lightest. Wide, wider, widest. New, newer, newest. Students, I hope you understand these comparative adjectives. If you like this video, then like, share and subscribe to my channel. Thank you so much for watching this video. Okay, bye. Take care.